everyone. Today I'm sharing a video on leptospirosis. For leptospirosis, we can remember some important things with the mnemonic SWIMS. SWIMS means it swims. So SWIMS SWIMZ. So S stands for spirochete. लेप्टोस्पायरा जो होता है स्पाइरल लाइक बैक्टीरिया होता है, जैसे कि सिफिलिस का ट्रेपोनेमा पैलिडम होता है. तो इट्स अ स्पाइरोकीट which belong to the genus leptospira. Then from W we need to remember it causes a Weil's disease. Weil's disease is a hepatorenal dysfunction and it's a very important disease caused by the leptospirosis. Then the main carrier which leads to the disease is rats. So white rats are an important source of leptospira. Then I stands for, it has two phases. It's a biphasic disease. So one is initial phase. The initial is a septicemic phase and the second phase is immune phase. So I stands for initial septicemic phase and immune phase. Then M. If we see, the mainly to make the diagnosis of the leptospirosis, we have serological test. And among the serological tests, the gold standard is microscopic agglutination test. And another thing need to be remembered from M is monsoon. We have outbreak of this infections during the monsoon, during the flooding and all that. Then Z. Z means it's a zoonotic disease. So basically the diseases which spread from animal to human, we call them zoonotic disease. So what happens is, जो लेप्टोस्पायरा है वो इन्फेक्टेड एनिमल के यूरिन में प्रेजेंट होता है, उसकी किडनीज में प्रेजेंट होता है, लाइक रैट्स, डॉग्स, कैट्स, जितने भी हमारे पास लाइफ स्टॉक्स है. देन व्हाट हैपेंस इज, वो इन्फेक्टेड एनिमल जब पी करता है, दैट यूरिन इन्फेक्ट्स द सॉइल और वाटर बॉडी जिसमें भी वो यूरिन पास करे. सो अल्टीमेटली वी विल हैव अ कंटामिनेटेड सॉइल और वाटर बॉडीज. एंड व्हाट विल हैपन, जब ह्यूमन उस कंटामिनेटेड सॉइल या वाटर बॉडी के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो जो भी उसके हाथ में माइनर कट्स, एब्रेजन्स या म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू दिस लेप्टोस्पायरा विल एंटर इनटू द ह्यूमन. So this is how we need to remember. So there are certain important thing which you can remember with the mnemonic SWIMS. And SWIMS से हम ये भी देख सकते हैं, मोटाइल बैक्टीरिया, काफी मोटिलिटी होती है इसमें. So you can remember by this. Now incubation period. So it has an incubation period of 1 to 2 weeks. And जो प्रेजेंटेशन है लेप्टोस्पायरोसिस का, it may vary from an asymptomatic to a fatal presentation. So asymptomatic भी हो सकता है. 70% में it leads to the mild febrile illness जो कि एनिक्टेरिक होती है, जिसमें कोई लिवर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. It behaves like a normal viral illness. Then another, in 20% it presents with the aseptic meningitis. Then it may also present with a severe disease जो हम Weil's disease का characteristic disease का बात कर रहे थे, that is characterized by the hepatorenal dysfunction which occurs in 5 to 10%. Then it can lead to the multi-organ dysfunction syndrome and it can prove fatal. Then हमने दो phases की बात करी थी. It's a biphasic. First was initial septicemic phase and the second was immune phase. So what happens is, during the first phase, that is initial phase, सेप्टिसीमिक, जब वो लेप्टोस्पायरा ब्लड में सर्कुलेट कर रहा होता है, सेप्टिसीमिया कॉज कर रहा होता है, इट लास्ट फॉर 2 to 7 days, जो कि प्रेजेंट करेगा विद द फीवर, चिल्स, राइगर्स, माइल्जिया, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, रैशेस में भी प्रेजेंट, देयर में बी कंजक्टिवल सफ्यूजन, देयर विल बी ऑर्बिटल पेन, lymphadenopathy or hepatosplenomegaly, all that will be present during the initial phase. Now after the initial phase which is lasting for 2 to 7 days, एक वीक के बाद पेशेंट एकदम एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं रहेंगे, पेशेंट विल बी फाइन. बट सम पेशेंट्स में लैंड अप इनटू द सेकंड फेज, जो सेकंड फेज कुछ एसिम्प्टोमेटिक फेज के बाद आ सकता है, जिसको हम इम्यून फेज बोलते हैं या सेकंड फेज बोलते हैं. अब इस फेज में हमको बैक्टीरिया ब्लड में नहीं मिलेगा. द लेप्टोस्पायरा इज नो मोर प्रेजेंट इन द ब्लड. इट हैज लोकलाइज्ड टू द वेरियस टिश्यू, लिवर, किडनी, एक्वस ह्यूमर, CSF, वहां जाके सेटल आउट हो जाएगा. सो now if you will try to detect the bacteria into the blood, it will not be there. So there will be antibodies present against the leptospira and the bacteria has settled down to the various tissues. And this immune phase में हमको different presentations मिल सकते हैं in the form of aseptic meningitis, encephalitis, cranial nerve palsies, other neurological symptoms हमको मिल सकते हैं. It may also enter into the liver and kidney and lead to the hepatorenal dysfunction, जिसको हम Weil's disease बोलते हैं. So we will be discussing the Weil's disease further. Now if we talk of Weil's disease, जिसको हम बोलते हैं icteric leptospirosis, ये कुछ हमको 5 to 10% पेशेंट्स में हमको मिलती है जिसमें लेप्टोस्पायरोसिस होता है.
एंड बेसिकली इस व्हील डिसीज में क्या होता है, जो इनिशियल फेज था हमारा फीवर वाला, चिल्स, माइल्ड एंड ऑल दैट, आफ्टर दैट पेशेंट हैज got hepatic and renal dysfunction and along with it may have hemorrhagic manifestation. So hepatic manifestation की अगर हम बात करें तो the patient will have jaundice, the patient will have hepatomegaly, pain in the right upper quadrant region, 20% will have splenomegaly also. अगर हम उसका LFT कराएंगे, liver function test, तो we will get elevation of the bilirubin, and there will be elevation of the direct bilirubin, that is conjugated hyperbilirubinemia will be there. Also liver enzymes will be raised, तो transaminases ज़्यादा मिलते हैं हमको, पर ये रहता है कि SGOT will be more elevated as compared to SGPT. Then also we will have the deranged coagulation parameters. PT, APTT will be deranged. Now after this hepatic, also it's causing the renal damage. So there will be non-oliguric renal failure. Basically tubular damage भी cause करता है, एजोटीमिया मिलेगा हमको. Along with it अगर हम यूरिन देखेंगे तो उसमें हमको हेमेचूरिया, प्रोटीनूरिया, कास्ट प्रेजेंट होंगे यूरिन में. Also there will be elevation of the creatinine. Then hemorrhagic manifestation, although rare है, but that will be in the form of epistaxis, hemoptysis, GI bleed और adrenal hemorrhage will be present. एंड क्योंकि दोनों ही चीजें होती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी मिलता है लेप्टोस्पायरोसिस में और डिरेंज कोगुलेशन पैरामीटर्स भी मिलता है. सो बेसिकली व्हील सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड विद द हेपेटोरेनल डिस्फंक्शन अलोंग विद द हेमरेजेस. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू रिमेंबर इज कि हम डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे. तो अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं किसी में लेप्टोस्पायरोसिस, इफ वी विल गो फॉर सीबीसी, तो हमको अनीमिया भी मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी मिलेगा, बट देयर विल बी ल्यूकोसाइटोसिस. तो देयर विल बी एलिवेशन ऑफ द डब्ल्यूबीसीज और उसमें पॉलीमॉर्फ प्रीडोमिनेंस मिलेगा हमको. देन हम एलएफटी कराएंगे तो देयर विल बी एलिवेशन ऑफ द लिवर एंजाइम्स, एसजीओटी, एसजीपीटी. अगर हेपेटोरेनल डिसफंक्शन के साथ है तो देयर विल बी एलिवेशन ऑफ द बिलिरुबिन आल्सो. Then CPK level will be high, and also serum creatinine we may get high in the hepatorenal dysfunction, and along with it we will get deranged coagulation parameters. Then हमको specific diagnosis जब बनाना होता है लेप्टोस्पायरोसिस का, वी गो फॉर दी सीरोलॉजिक टेस्टिंग. उसमें हमने जैसे डिस्कस किया था कि जो एंटीबॉडीज हैं हमको 5 डेज के बाद मिल सकते हैं, तो सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस वी कैन इज पॉसिबल आफ्टर 5 डेज. गोल्ड स्टैंडर्ड इज माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट. Then we can also get IgM ELISA done for leptospira. Then culture is not very easy in the cases of leptospirosis. Also another thing is we can go for the dark field microscopy. जब आप initial 7 days में कर रहे हो तो आप blood से देखोगे तो you can get dark field microscopy में, but after 7 days it will not be there in the blood, so you can go for the urine में dark field microscopy. Then PCR भी हम कर सकते हैं, but it's not very much available. Then लेप्टोस्पायरोसिस को हमको किससे डिफरेंशिएट करा, सो वी नीड टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द कॉमन इलनेस जो मिमिक करती हैं, लाइक डेंगी एंड मलेरिया, एंथेरिक फीवर, अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, हंटा वायरस इन्फेक्शन. ऑल दिस नीड टू बी डिफरेंशिएटेड. नाउ हाउ यू विल ट्रीट लेप्टोस्पायरोसिस. तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है, अगर हम सीवियर केसेस को ट्रीट कर रहे हैं तो पैरेंटल पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस. एंड उसके अलावा जो ऑल्टरनेटिव है हमारे पास सेफ्ट्रैक्सोन, आईवी टेट्रासाइलिन, ये सब हम यूज कर सकते हैं. बट जो माइल्डर केसेस है, माइल्ड केसेस में यूजुअली वी गो फॉर ओरल अमोक्सिसिलिन और वी गो फॉर द डॉक्सीसाइक्लिन. थैंक यू.